access, polygamy to be banned and live-in relationships to be declared, scheduled tribes to be exempt from UCC regulations. Big showdown in Parliament over Congress MP DK Suresh's separate country for the South remark. Union Minister comes down heavily on the Congress, seeks apology from Sonia and Rahul Gandhi. The Allahabad High Court today refused to stay the puja that's been started at the Gyanvapi mosque complex in Varanasi. The country's top Muslim organization, the Jamiat Ulema-e-Hind, has now approached the Supreme Court. Asuddin Owaisi has hit out, saying history cannot be corrected like this. The Allahabad High Court on Friday refused to give relief to the Gyanvapi Mosque Committee. The Muslim side had challenged the Varanasi District Court's Wednesday order allowing Hindus to perform puja in the southern cellar of the mosque complex. They're now preparing to knock on the doors of the Supreme Court for relief and review. ये मुल्क का मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अलमिया है कि इस मुल्क के अंदर आज मुसलमान ये कह रहा है कि मसले की बुनियाद लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अकीदत के ऊपर है, कानून के ऊपर नहीं है। रात के अंधेरे में अपील किए बगैर आप आरे लेकर रास्ता खोल देते हैं। क्या पैगाम दे रहे हैं सर? 600 साल की मेहरौली की मस्जिद को बगैर को नोटिस दिए आपने डिमोलिश कर दिया। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। हिस्ट्री कैन नॉट बी करेक्टेड बाय डेमोलिशन। आप ये नहीं कर सकते। The Allahabad High Court ordered the Advocate General to maintain law and order within and outside the Gyanvapi mosque premises. There is one mosque. They are also guiding the namazis to shift from one place, from one mosque to another due to overcrowding in the Gyanvapi complex, and they are alerting those because you can clearly see the visuals, a long shot from here where you can see a lot of namazis coming from this particular narrow lane for the namaz in the Gyanvapi while many are returning back, and this is here it is that they are guiding and letting them know that you have to change the ways. आप लोग क्या सलाह दे रहे हैं जहां पर भीड़ हो रही है उन लोगों को क्या सलाह? आगे और भी मस्जिदें हैं ना भैया, तो वहाँ भेज दिया जा रहा है। जब यहाँ फुल होगी तो क्या जरूरत है भीड़ लगा के? अभी और भी जगह होगी, 2 बजे नमाज है, फिर 3 बजे भी नमाज है, जुमा तो होगी 2-3 जगह, अभी आराम से वहाँ पढ़ें, भीड़ लगाने की जरूरत क्या है? Hindu devotees, on the other hand, continue to throng the Gyanvapi complex for the second day to offer prayers at Vyasji ka Tehkana. What I witnessed after entering there, that as the Gyanvapi mosque is right next to it, and what I saw, if I try to explain in the diameter, that Tehkana is right there in front of Nandi. This is Nandi and this is Tehkana, and Nandi is looking right next to it. This is Tehkana, the part of Gyanvapi mosque right now. And right there is a Wazu Khana where it is being claimed by the Hindu side. It's Shivling, while fountain by the Muslim side. With Samad Srivastav in Varanasi, Bureau Report, India Today. The Archaeological Survey of India has found 55 structures considered to belong to the Hindu religion at the Gyanvapi mosque complex. Several Muslim petitioners and those in the community unhappy with the decision of the Allahabad High Court to allow prayers to go on. This will now be challenged in the Supreme Court. Joining us now is Maulana Arshad Madni, head of the Jamiat Ulema-e-Hind, the most influential seminary in Uttar Pradesh. Crores of people across the country listen very carefully to what Arshad Madni and the Jamiat Ulema-e-Hind say. Maulana Madni, स्वागत है आपका इंडिया टुडे पे। सबसे पहले ये बताएं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई है जिसमें ये निकल के आया है कि 55 ऐसे स्ट्रक्चर्स ज्ञानव्यापी मस्जिद के इलाके में पाए गए हैं जो कि हिंदू धर्म से राब्ता रखते हैं। इसके आधार पर अब ये हिंदू साइड ये कह रही है कि इससे साबित हो जाता है कि वहाँ पर एक वक्त पे एक मंदिर था जिसको ढहाकर वहाँ पे मस्जिद बनाई गई। इसलिए वो चाहते हैं कि जिस तरीके से अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, ठीक वही अब काशी में होना चाहिए। ज्ञानव्यापी मस्जिद जहाँ पर है वहाँ पर भी एक मंदिर बनना चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल में आपने उस जगह को नहीं देखा है। ये गंगा जो नदी जाती है उसके किनारे के ऊपर तमाम मंदिर ही मंदिर बने हुए हैं। दरमियान में एक सड़क है, उस सड़क के इस पार तमाम मंदिर बने हुए हैं, दूसरी तरफ ये मस्जिद है।
जिन चीज़ों को कहा जा रहा है कि वहाँ बुत हैं और वहाँ मंदिर होने के आसार हैं, वो जगह हैं कि जो मस्जिद से हटी हुई हैं। जहाँ मस्जिद है वहाँ मंदिर होने का कोई असर नहीं है, कोई सबूत नहीं है, वहाँ कोई मंदिर की जगह नहीं है। लेकिन हाँ, उसके दाएं बाएं किबले की तरफ अगर आप चले जाएं तो गंगा तक मंदिर ही मंदिर हैं। ये बात गलत है। वहाँ ने अगर वहाँ होते तो जो तहखाना है जिसके अंदर मूर्ति लाकर रखी गई है और जिस मूर्ति के ऊपर पूजा रात में कराया गया है, ये मूर्ति बाहर से लाकर न रखी जाती, यहाँ पहले से मूर्ति होती। लेकिन यहाँ पहले से मूर्ति नहीं है, तो फिर कैसे कह दिया जाएगा कि यहाँ पहले से मंदिर बना हुआ था और उसकी जगह मस्जिद बनाई गई है। हमारा ये अकीदा है, हमारा ईमान है, हमारी अल्लाह के नबी जो फरमाते हैं उसके ऊपर कहते हैं कि किसी ऐसी ज़मीन पर जो ज़मीन मुसलमान की नहीं है, दूसरे की है, उस ज़मीन को बज़ोर ज़बरदस्ती छीन कर उसके ऊपर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, नहीं बनाई जा सकती, नहीं बनाई जा सकती। ये कैसे हो सकता है? हम बाबरी मस्जिद के सिलसिले में भी यही कहते थे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ये बता दिया कि मस्जिद अपनी जगह के ऊपर है, यहाँ मंदिर नहीं था। इसका मतलब ये है कि ये राम जन्मभूमि नहीं है जहाँ मस्जिद बनी हुई है। हमारा दिल बिल्कुल शादमान है। हम यही बात कहते हैं कि चाहे वो मथुरा की ईदगाह हो, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद हो, वहाँ कभी मंदिर नहीं था, हो नहीं सकता। ये इस्लाम के अकीदे के खिलाफ है। सर, पर ये तो एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक बहस है। मुस्लिम साइड ने अपना पक्ष रखा, हिंदू पिटिशनर्स ने अपनी बात रखी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट निकाली जिसमें 15 शिवलिंग, 3 स्कल्पचर्स विष्णु भगवान के, 3 गणेश, 2 नंदी, 2 कृष्णा, 5 हनुमान वहां पर पाए गए। और इसके आधार पे अब पहले लोअर कोर्ट ने और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वहां पर प्रार्थना करने की इजाज़त दी है। ये तो अब फैक्ट्स है, वरना ये बहस तो चलती रहेगी क्योंकि आप कुछ कहते हैं, हिंदू साइड कुछ कहती है। आखिरकार कोर्ट का जो फैसला है, कोर्ट के फैसले से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अब ये बताइए कि सर्वे की हैसियत क्या है? अगर सर्वे की कोई हैसियत होती तो क्या बाबरी मस्जिद अखाड़े को दे दी जाती? मुझे ये बताइए कि सर्वे की हैसियत गवर्नमेंट के नज़दीक या आपके नज़दीक है क्या? सर्वे की रिपोर्ट के ऊपर वो ये कह रहे हैं कि यहाँ कोई चीज़ नहीं थी, इसके बावजूद मस्जिद दी गई। अब जितने भी कवानीन की बुनियाद के ऊपर सर्वे होंगे, हर सर्वे के अंदर, चूँकि हमारा ये एतराज़ था, इसलिए हर सर्वे के अंदर इस चीज़ को लाया जाएगा कि यहाँ मूर्ति रखी हुई है। लेकिन हकीकत ये है, आप जाइए खुद सर्वे कीजिए, आपको मिलेगा कि मस्जिद से हटी हुई वो तमाम मूर्तियाँ हैं जो दूसरी जगह रखी हुई हैं, यहाँ मूर्ति लाकर रखी गई है और पूजा कराया गया है। इससे पहले वहाँ कोई मूर्ति नहीं थी। कैसे कह दिया जाएगा कि मूर्ति रखी हुई है? इसका मतलब यह है कि सर्वे रिपोर्ट सही नहीं है, गलत है सर्वे रिपोर्ट। पर सर, ये भी तो हकीकत है कि जब मुकुल बादशाह आए तब करीब कहा जाता है कि 3000 मंदिरों को ढहाकर वहाँ पर मस्जिदें बनाई गई। और ऐसे में जो हिंदू पिटिशनर्स हैं, अभी हाल ही में मैं अयोध्या में था जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, वहाँ पर कईयों ने कहा कि अगर काशी मथुरा मिल जाए तो अयोध्या काशी मथुरा का ये ट्रायंगल कंप्लीट करके उसके बाद इस तरह से जो ऐतिहासिक बहस है उससे हम आगे बढ़ सकते हैं, ताकि बार बार ये जो इतिहास की बहस है उसकी तरफ ध्यान न खींचा जाए। आपको ये मालूम नहीं है कि कितने मंदिर हैं जिन मंदिरों को मुगल बादशाहों ने कितने बड़े बड़े वक्फ किए हैं? इसका मतलब ये है कि आप जानते नहीं कि क्या चीज़ है। मैं ये बात कहता हूँ कि मुगल बादशाह जो आए हैं वो बड़े बड़े बेपनाह उलमा को लेकर यहाँ आए हैं, उन्होंने किताबें यहाँ लिखी हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में जंगल का राज आकर के उन्होंने कायम किया है। हो नहीं सकता। मैं कहता हूँ इस्लाम मजहब के अंदर जायज़ नहीं है, जायज़ नहीं है, जायज़ नहीं है कि किसी की ज़मीन को ज़बरदस्ती ले करके वहाँ मस्जिद बनाया जाए। अगर होता तो वो उलमा जो उनके साथ थे वो सबसे पहले झंडा खड़ा करते
और हमने नहीं इस बात को सुना। हमें यकीन नहीं है। हम जानते हैं कि जहां मस्जिद बनी है वो मस्जिद अपनी जगह पर बनी है। हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट ये ऐलान कर रहा है कि बाबरी मस्जिद अपनी जगह है। मस्जिद को मंदिर की जगह नहीं बनाया गया। हम हर मस्जिद को इसी तरह समझते हैं। क्या बात आप कर रहे हैं? इसका मतलब यह है कि आपको हिंदुस्तान के इतिहास और मुगल बादशाहों ने जो कुछ मुल्क के अंदर किया आपको कुछ मालूम नहीं है। सर, आपकी जो दलील है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने रखी गई, वहां पर आपको कोई रिलीफ नहीं मिली। अब कहा यह जा रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, क्योंकि आखिरकार ये एक ऐतिहासिक बहस है। आपका पक्ष एक कहेगा, हिंदू साइड दूसरी बात कहेगी, और ऐसे ही चलते रहेगा। नहीं, ये ऐतिहासिक बहस है। आप गलत कह रहे हैं कि ऐतिहासिक बहस। ये तो 3 दिन पहले की बहस है कि वहां कोई मूर्ति नहीं थी। इतिहास कहाँ जा रहा है? ये तो 3 दिन पहले की बहस है कि मस्जिद के नीचे किसी तहखाने के अंदर कोई मूर्ति नहीं थी। जाते हुए रिटायरमेंट से पहले आखिरी फैसला दिया, मूर्ति को लाकर रखवा दिया गया और यहाँ इबादत करी, पूजा करानी शुरू कर दी। ये ऐतिहासिक बहस नहीं है, ये तो वो हकीकत है जो 3 दिन पहले दुनिया के सामने थी। ये आगे यह इतिहास कहाँ है? इतिहास के ऊपर बहस करते रहिएगा जब करेंगे आप। तो इसके बाद अब होगा क्या? क्योंकि वहां पे पूजा तो स्टार्ट हो गई है। आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हो। ये हमारा पहला एहतजाज है। मुल्क के अंदर 75 साल में कोई एहतजाज ऐसा नहीं हुआ कि ये कहा जाए कि अदालती फैसले के ऊपर हमारा एतमाद उठ रहा है। अदालत फैसले कानून के एतबार से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे तक फैसले इतिहास के बुनियाद के ऊपर और अकीदत की बुनियाद के ऊपर हो रहे हैं। हम ये समझते हैं कि हमारा ये एहतजाज सारी दुनिया के अंदर लिखा जाएगा और सारी दुनिया जानेगी। इसका मतलब है कि मुल्क के ऊपर से एक अक़लियत को उसके सुप्रीम कोर्ट और कुल कोर्टों के ऊपर से मुल्क का एतमाद उठ गया। ये बहुत खराब चीज है। अच्छा, आखिर में ये बताएं, ये जो एक मांग हुई कि अगर मथुरा और काशी में मंदिर बन जाए, वहां पे अच्छे से पूजा शुरू हो जाए, तो ये जो काफ़ी लंबी एक पुरानी बहस चली आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी। आप जमीयत उलेमा चलाते हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं इस मांग को सर? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी और जुल्म है। ना हमें यह हक हासिल है कि हम किसी कौम की इबादत गाह को हासिल करें बज़ोर ज़बरदस्ती लें, न दुनिया की किसी ताकत को यह हक हासिल है कि वो हमसे हमारी इबादत गाह बज़ोर ज़बरदस्ती ले। जो लेता है वो जुल्म करता है, ना करता है, हक को उसके हवा भी नहीं लगी है। हम तो ये फैसला करते हैं, हम अपनी इबादत गाह किसी को दे दे मर्जी से, ये नहीं होगा। मौलाना अरशद मदनी, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आपका शुक्रिया। द head of the Jamiat Ulema-e-Hind striking a very belligerent note, saying that history is being altered and that new facts on the ground are being created. They intend now to challenge the Allahabad High Court's decision in the Supreme Court. The puja which is being performed at present is in the south cellar of the Gyanvapi Mosque complex. The ASI survey revealed a total of 55 stone sculptures, which included 8 Shivlings, 2 Vishnu idols and 2 Hanuman idols. Here are the details of the ASI report. Resonant chants. Puja and Aarti unfold amidst tight security measures. In the aftermath of court directives, sacred Hindu ceremonies unfolded at Gyanvapi, a pathway leading to the Tehkhana. The cellar where the majestic Nandi sits before the Vishwanath temple has been unveiled. Idols discovered during the Gyanvapi survey are offered prayers. वो जो बंद तहखाना था उसको खोलकर और उसमें जो भी विग्रह हो उनको पूजा पाठ करने का निर्देश दिया गया है. The ASI survey has cast revealing lights on the sanctity of Gyanvapi's southern cellars.
Among the 55 stone sculptures identified, one theologically significant Vishnu sculpture stands complete. 8 Shivalings, 2 Vishnu idols and 2 Hanuman idols grace a single tehkhana. An early medieval sandstone Vishnu sculpture adds to the historical tapestry. Various remnants of sacred Hindu iconography meticulously documented in the ASI findings. भगवान की 5 आरती है, सुबह की मंगला आरती, दोपहर की भोग आरती, शाम की सप्तऋषि आरती, रात की श्रृंगार आरती और शयन आरती। जो भगवान विश्वनाथ का विधान है वही विधान यहाँ पर होगा। The Gyanvapi cellars aglow with the radiance of clay lamps, the splendor rekindled after a lapse of 31 years. Bureau Report, India Today. The Ayodhya project has been completed. What's likely to happen at the Gyanvapi complex next? To talk about this, we're joined on this broadcast by Atikur Rahman, who's an Islamic scholar. Waris Pathan is a member of Asuddin Owaisi's party, the AIMIM. Jai Bhagwan Goyal is the working president of the United Hindu Front, leader of the BJP. With us also is Dr. Geeta Bhatt, who's an academician and a political analyst. I want to go across to Geeta Bhatt first. Dr. Bhatt, given the fact that the Ayodhya temple consecration happened with so much fanfare, questions are being asked by the Jamiat Ulema-e-Hind about the speed at which the district administration is moving and what the ultimate aim is at the Gyanvapi mosque complex. The court had given 7 days. It happened within a matter of 7 hours. So it almost seems that somebody is in a very big hurry to make something dramatic happen at the Gyanvapi complex. Is Gyanvapi Ayodhya 2.0? Well, Rahulji, I would like to just put it in context that, in near Jerusalem, there is a small town called Bethlehem where there is Church of Nativity. And there is a very small room there where the Christians, they say that Jesus Christ was born. Crores of Christians, they go and visit that place. No one has ever questioned them or, asked them for some scientific proof on the basis of which they say that, it is the place of Jesus Christ's birth. But unfortunately, in this nation, we have seen that the Hindu community has, for time and again, they have, and within the constitutional ambit, they have put forth their right to ask to pray that at the places which are very, very revered to them. And this is exactly what has happened at Gyan. This is not something, which is in a hurry. Kindly look at it that since 1993, it was not where, till 1993, the Shringar Gauri Pujan used to happen there. Or, every day, people could actually go in, and there are people who have seen with naked eyes that, all the motifs and of the Hindu gods on the backside of the, of the masjid wall. This is something which people even today, they are there who have seen it. But it is only post 1993 when there was a restriction which was put and this pujan was stopped by the government, and then of course then there were a lot of legal hassles. People went to the court from both sides, and we all know what the history has been. So there is no hurry, but rather it is strange that the mosque committee on 17th of January, when the judicial magistrate had given the district magistrate and had given him the power to actually being as the first bearer of the temple and to do the puja, nobody questioned it. It is only after 31st of January that suddenly there has been so much of hue and cry. And okay, so Waris Pathan, here's what the Hindu side is saying. This is a matter that's been going on for 30 years, so it's not as if there's any sudden tearing hurry. Point number 2, we're just reverting to the pre-1993 status where the family of Pandit Somnath Vyas has been performing puja at this very complex, and therefore we're just reverting to what used to be the norm earlier. It's not as if any new ground is being broken just yet. Waris Pathan. Well, now I'll go step by step. Let me say by pointing out that well, now I'll go point by point and allow me to make my point out. Thank you. The first and foremost thing is that the judgment order passed by the Varanasi court
as said by the Anjuman Intezamia Committee, and I also stated and reiterate that the judge order is per se illegal, bad in law, and is violation of the Places of Worship Act 1991. Now, prior to passing of this order on the last day of his retirement, the judge on 15 days prior to it had appointed a district magistrate as the court receiver of that cellar. But no orders were passed to offer prayers. After passing the order, he said 7 days time is given, but the other side did not wait for 7 days. Within 7 hours, they started preparation for making the puja. Well, the Anjuman Intezamia Committee went to the Honorable Supreme Court. Supreme Court directed that approach the Allahabad High Court, and today, fortunately, unfortunately, the Allahabad High Court did not allow our prayers, and they are allowed to pray. But I am sure that the order will be challenged before the Honorable Supreme Court, and the Supreme Court this time will definitely rule in our favor. Why do I say, Rahul, this? Because Places of Worship Act 1991 was made with intention. What was the intent of that act during that time, which was passed in the Parliament after hearing all the sides, after properly arguing in the Parliament? That all the structures, monuments, religious places which are prior to 15 August 1947 at that place, you cannot change the nature or character of that place. It was made clear. But during Babri era also, we said that, say, we have apprehension that they might do, as you said, that can this be 2.0 from the Babri time? This 6 December can be 2.0. We apprehend that also, because the BJP and the Vishwa Hindu Parishad wants the entire nation to be taken back to the 92 era of the Babri. During that time also, if the Babri Masjid was there as it is, when the Supreme Court passed an order, today you, me and everybody knows that the scenario would have been totally different. But on 6 December 1992, which we call as the Black Day, the democracy of the country, our Babri Masjid was demolished through a conspiracy. See, the Supreme Court passed an order. The judges of the Honorable Supreme Court also stated in the judgment, similar arguments placed that time also, that there is no evidence to show that the temple was destroyed to build a mosque. The Supreme Court further stated that the No, but now we have an ASI committee. One second. Now we have a report by the Archaeological Survey of India, Waris Pathan, which clearly shows that there are enough Hindu religious structures in that complex. At least 55 Hindu religious structures have been found, and there is an ASI report which bears this out. Allow me 10 seconds. Just now you were playing the video of Jamiat Chief Madani, the senior leader. He was present there and he clearly said that there were no idols found there. And what is the evidentiary value of the report of the ASI? They are handwritten, they are handmade, they are their people. Tomorrow they will come and say anything that we are just below the India Today studio. We feel that there is an idol there. Will they demolish the India Today conclave? What they claim that this place belongs to us? Just now Madani said there is no idol. The idols have been placed there for the purposes of puja. Similar thing during the Babri issue. They said रात के अंधेरे में प्रकट हो गए. Idols emerged during 23rd and 24th night of December, and after that what happened? Prayers were not allowed, and then the matter went on the Supreme Court. And then see what is happening in the country today. Jai Bhagwan Goyal, as the working president of the United Hindu Front, आप ये जो जमियत उलेमा-ए-हिंद का हम इतना कड़ा बयान देख रहे हैं, बेसिकली वो इंडिकेट कर रहे हैं कि इस तरीके से तो नहीं होगा. अयोध्या में राम मंदिर बन गया, अगर आप हर जगह पे जो मस्जिद है उसको बदल बदल के मंदिर बनाएंगे तो कहीं ना कहीं 17 करोड़ जो मुसलमान हैं उस कम्युनिटी में रिएक्शन तो होगा. देखिए राहुल जी, बरसों से हमारा संत समाज, हमारी विश्व हिंदू परिषद, मुसलमान नेताओं से ये निवेदन करते आए हैं, अयोध्या, काशी और मथुरा, ये हमारे 3 प्रमुख स्थान हैं जो हमारे सनातनियों की आस्था के सबसे बड़े प्रमुख केंद्र हैं. आप प्यार से, मोहब्बत से, राजी राजी से ये हमें दे दें तो अगला कोई विवाद शायद हम खड़ा नहीं करेंगे. मगर इन्होंने आज तक किसी बात को माना नहीं, और आज राम मंदिर बन गया है, प्रभु राम अयोध्या में आ गए हैं, और उसके बाद काशी की बात आ रही है. अभी आप ही बता रहे हैं कि एएसआई का सर्वे हुआ कोर्ट के आदेश पे. सर्वे के बाद जो रिपोर्ट आई वो दोनों पक्षों को दी गई. दोनों पक्षों की रिपोर्ट पब्लिक में जाहिर हुई, जिसमें लगभग 55 ऐसे वो साक्ष्य मिले जो चीख चीख के कह रहे हैं कि ये मस्जिद नहीं, ये मंदिर था, मंदिर था, मंदिर था. और उसके बाद अभी जो डिस्ट्रिक्ट जज ने हमें वहां पर पूजा करने का अधिकार दिया है, जो 93 में बाबरी ढांचा गिरने के बाद मुलायम सिंह ने मुसलमान समाज को खुश करने के लिए हमारी वो पूजा रखवाई थी बिना किसी लिखित आर्डर के. बरवली
वो पूजा चालू हो गई है। तो वहां तो सीधा सीधा प्रमाण है कि वहां पर प्रभु भोले बाबा का मंदिर था और मंदिर है। अगर आप आज भी जाकर के देखेंगे, जो नंदी है, नंदी का मुख हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है। जो वहां पर नंदी विद्यमान है, उनका मुख उधरी है जहां इन्होंने मस्जिद बना रखी है। और ये ना एएसआई को मानते, ना हाई कोर्ट को मानते, ना सुप्रीम कोर्ट को मानते, ना देश के कानून को मानते, तो किसको मानते हैं? ये दुनिया जानती है अयोध्या का बाबर ने तोड़ के बनाई थी, और ये हमारा काशी विश्वनाथ और हमारी कृष्ण जन्मभूमि औरंगजेब के ऑर्डर पर टूटी थी। ये सारी दुनिया को पता है। और तो और जो यहाँ कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के बाहर भी खुलेआम लिखा हुआ है 28 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़ करके उनके मलबे से बनाई गई। जामा मस्जिद के नीचे भी भोले बाबा का मंदिर है। तो इन्होंने 3 नहीं 30,000 ऐसे स्थान हैं जो हमारे मंदिरों को तोड़ के इन्होंने मस्जिद Atikur Rahman, और हमारा Atikur Rahman, here's what several of these sadhu sants are saying, that there are 3 complexes that are very important: Ayodhya, Kashi Vishwanath and Mathura. If this could be resolved amicably, then this battle ceases. In the manner in which Kashi Vishwanath is shaping up, it almost seems to be becoming an Ayodhya 2.0. There is a sense of inevitability about how events move from here. Do you think at some level there should be some conversation about whether Kashi and Mathura can be handed over amicably, and then this battle and this old historic debate just ends? Rahul, I abhor the idea of basing my arguments entirely on religiosity, because the moment I do it, I am charged with ये देश शरिया से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा. So I will be primarily pointing 3 points. Then I will be answering your basic question. My point number 1, Rahul, is as a researcher on Islamic studies, whom should I believe? I have believed the Supreme Court on the Ayodhya matter, which made me realize that law is not the answer for correcting historical wrongs. Point number 2, the Home Minister of India, Mr. I think you went on mute. Can you hear me? Yeah, I hear you now. Go on. Yeah. Amit Shah ji said that आस्था के मामले पे Supreme Court को interfere नहीं करना चाहिए. And point 3, just 10 days back on a lawsuit, the Supreme Court Chief Justice said that we will not be directing the government to do an X or a Y or a Z related to places of worship. Whom should I believe, Rahul? Now today you are calling us to say that amicably just solve it out. I would question Bhagwan Goyal ji that, sir, since 31 long years, where were you? You should have clubbed this matter with the Ayodhya thing. You should have challenged the 91 places of worship that on the day itself. You are late by 31 years, sir. This country needs, Rahul, a very, very amicable solution on so many grounds. And one of the important grounds is the unity among the people, mainly the 2 major communities. We are looking towards the government. Why is the government playing this shroud on the people of India by just holding the year from coming back, not straight away having a special session of the parliament and doing what it does entirely against one faith? This country, Rahul, is fast moving towards a theocratic Okay, let Geeta Bhatt respond to this, that the Muslim community was applauded for responding with restraint when the Supreme Court order on the Ayodhya Ram temple came. Even the consecration happened very peacefully. If, however, you keep rubbing it in and keep stomping a majoritarian ethos, at some point in time there will be concerns that there will be a pushback which is not good for the social fabric of our country. Geeta Bhatt. Well, Rahul ji, I mean, I would like to tell Atikur Rahman ji that it's better late than never. And this is a matter which, which really is not late. We have been, the Hindu side has been contesting it
ever since there has been the ban was put up by the Mulayam Singh Yadav government on doing the puja of Shringargari. Now, the point here is that time and again, we have, there are three places which have always been said by the Hindu side that these are the most revered places for us. And, why is it that the problem has been that for decades altogether, in this nation, the temples have been governed by the governments, and the Waqf boards have been given the right that they can just at any time put finger on any piece of land and say that it is theirs. There has been Hajj subsidies which have been given for decades together. It is only the Supreme Court intervention that stopped. Otherwise, it was the government which was paying for, sending people for pilgrimage for Hajj. So, you see, we need to realize that we together, the Muslim community, you have to become part of the mainstream of this, of this society. And for that, let us, we need to respect each other's, places of worship. And at the same time, we also need to realize that we cannot change history, but we need to accept what has happened in the history. Okay. Now, Atikur Rahman, here is the fact. Anybody who goes to the Gyanvapi mosque complex and looks around, there are enough signages there, there are enough markings there to show that this at some point in time was a Hindu complex. The fact that Aurangzeb had this temple destroyed and had a mosque built over there, is not just in the ASI report, but is actually visible to the naked eye. And that is something, till that issue gets resolved, that will always be a problem which at some point in time is bound to come over and has to be dealt with. Rahul, my questions are not answered. I am not talking of religiosity. I am talking of constitutionalism. Be it as it may. But Gita ji should tell us that what exactly, if the Astha problem is there, then why they failed to club it all together? Why were they silent all these years? The parliament was in their hands, the Hindutvavadi government was there, and every time and again all the BJP leaders, they have vowed to be Hindu Hriday Samrat. I am just basing my argument that the two major communities cannot be engaged in this cycle of animosity. The government's primary responsibility is towards the nation, and being a very, very responsible government, they should sort out problems. Even in the nip of the bud, this should have sorted out. जय भगवान गोयल, जब अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस वक्त पे आरएसएस ने खुद कहा कि ठीक है, अब पुराने जख्म कुरेदने का वक्त नहीं है, अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है, देश को एक करने की ज़रूरत है। वारिस पठान कह रहे हैं, अतीकुर रहमान कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से पुराने फसादों को नया किया जाए और दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में द्वेष पैदा किया जाए, तो ये तो कभी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, ये तो चलता रहेगा। देश ऐसे, जिस हम अमृत काल की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, अगर 17 करोड़ लोग इनसिक्योर हो जाए तो वो कैसे हो पाएगा? देखिए, आज जो 17 करोड़ लोग हैं, वो जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना था, उस वक्त मुसलमानों की आबादी हमारे देश में मुश्किल से 8% थी, जो आज लगभग 15% हो गई है। ये जो 80% देश का हिंदू समाज है, उसने इन सबको गले से लगाया है, यहाँ रखा है, सरकारों ने सारी सुविधा दी है। आज सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन्होंने राजीव गांधी के ऊपर दबाव डाल के बदलवा दिया था, क्योंकि शाहबानो के मामले में वो मामला इनके खिलाफ था। ठीक है, रही बात भाईचारे की, हम तो अब भी कह रहे हैं, आज भी देश का हिंदू समाज लड़के नहीं ले रहा कुछ। राम जन्मभूमि का मामला आया, कोर्ट से हुआ, कितने साल कोर्ट में लग गए। यहां पर काशी विश्वनाथ का मैटर भी कोर्ट के माध्यम से हो रहा है, काशी में भी हम कोर्ट में लड़ रहे हैं। हम कोई सीधी बाहर नहीं लड़ रहे, संवैधानिक तरीके से कोर्ट में जाकर के अपना पक्ष रख रहे हैं। ये अपना पक्ष रख रहे हैं, इनके पास कुछ है ही नहीं, और हमारे पास सारे साक्ष्य हैं जो मुंह से बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि देखो यहाँ मंदिर है, यहाँ मंदिर था, यहाँ मंदिर था, तो वहां तो मस्जिद का साक्ष्य मिले नहीं कोई। फिर भी हमारा संत समाज, हमारा विश्व हिंदू परिषद, हमारे संघ के लोग आज भी, अगर मुस्लिम समाज के लोग
देश में शांति और भाईचारा, भारत को विकसित भारत बनाने में और भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना सहयोग देना चाहते हैं, तो जितने भी मुस्लिम लीडर हैं, मुल्ला मौलवी हैं, वो बैठे, हमारे संतों के साथ बैठे, विश्व हिंदू परिषद के लोगों के साथ बैठे, आरएसएस के साथ बैठे। हमारे तो मोहन भागवत जी ने इतनी तक बात कही थी कि जितने भी देश में रहने वाले लोग हैं, सबका डीएनए एक है। जब वो इतनी बड़ी बात को मान रहे हैं, इन सब का हमारा डीएनए एक है, क्योंकि उस वक्त जो मुगल क्रांति आए, उन्होंने तलवार के बल पे हमारे लोगों को इस्लाम को कबूल करवाया था। Respond to this assertion that the Hindu side, to be fair to them, isn't doing anything on their own. They are going by the court's orders. Even in Ayodhya and in the Kashi Vishwanath case, everything that's happened has happened on the back of a court ruling. It's not as if they've gone and broken the law themselves. वेल आई विल रिप्लाई टू हिम। देखिए महाराज जी, मैं आपकी बातों को सुना, आपने अच्छी बातें करी कि हमने सबको गले लगाया, हम भाईचारा चाहते हैं, हम सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म को मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं देश में अमन शांति बने रहे, भाईचारा बना रहे, सब एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के त्यौहार बनाए सब। तो आपको भी दिल बड़ा करना चाहिए ना, खाली हम ही करते रहे। आप तो इतनी माशाल्लाह 80% हो आप लोग तो पूरे देश के अंदर, तो आप हमारे हिंदू भाई लोग क्यों आगे आके नहीं बोल देते, क्यों बड़ा दिल नहीं दिखा देते, बोलते कि ठीक है भाई, हमने एक मर्तबा आपकी बाबरी मस्जिद को तो शहीद कर दिया, वो तो हमने आपसे छीन ली, चलिए हम अभी आपकी कोई मस्जिदों को हाथ नहीं लगाएंगे, किसी चीज को नहीं करेंगे। अरे इतने सारी जमीन जायदाद पड़ी है पूरे देश के अंदर, कहीं भी आप अपना मंदिर बना सकते हैं, जाकर बनाइए, हम भी आपका समर्थन करेंगे। तो आप अपना बड़ा क्यों दिल नहीं दिखाते, चलिए बताइए। अरे हम तो पहले भी बोल रहे हैं कि हमारा भी जो पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, बड़ा दिल दिखाते हैं, वो भी आस्था की बुनियाद के ऊपर बड़ा दिल दिखाते हैं, आस्था की बात, बड़ा दिल दिखाते हैं, दिखाइए आप, हम 30,000 छोड़ने को तैयार हैं, आप बड़ा हम दिखाते हैं ना जी, हम 30,000 छोड़ने को तैयार हैं। अरे बाबरी 30,000 मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनी है पूरे देश में, महाराज जी आपने बाबरी ले लिया, सिर्फ 3 की बात कर रहे हैं। बाबरी महाराज जी ने उस वक्त क्या बात हुआ था के टाइम पे कि आप इसके आगे कुछ नहीं, बाबरी के बाद आया था कुछ नहीं लेंगे, फिर अभी आप क्यों लेने की बात करते हो, क्यों सर्वे कराना चाहते हो, क्यों मस्जिद के अंदर फिर से मूर्ति रख के बाबरी के समय से ही हमारे विश्व हिंदू परिषद के नेता माननीय अशोक सिंघल जी ये बात कहते आए हैं कि 3 दे दो, आज भी हम वही बात कह रहे हैं। Okay, this is a never-ending battle. You know, both sides sticking to their positions. The court at this moment allowing for the puja to take place. It will be interesting to see what the Supreme Court says in this matter. That's where the Jamiat Ulema-e-Hind wants to go next. We'll track the story very closely. I'm slipping into a break and thanking my guests. When we come back, big showdown in Parliament over Congress MP DK Suresh's separate country for the South remark. Union ministers have come down heavily on the Congress, sought an apology, and also we've got information coming in that there is a notice that's been put at Kejriwal's residence. A team of the Delhi crime branch has reached the Delhi CM's house. We'll have details when we come back on the other side. Pure Wash Electronic Seat by Kohler. Wish everything was this intelligent. Get ready for an immersive journey into the heart of news, politics, and insights that matter. Join India Today now on WhatsApp. Scan the QR code. Sveda by Kohler. Wish everything cared for your skin. Get ready for an immersive journey into the heart of news, politics, and insights that matter. Join India Today now on WhatsApp. Scan the QR code.
by Cola. Makes you wish everything was as vibrant. Get ready for an immersive journey into the heart of news, politics, and insights that matter. Join India Today now on WhatsApp. Scan the QR code. Pure Wash Electronic Seat by Kohler. Wish everything was this intelligent. Get ready for an immersive journey into the heart of news, politics, and insights that matter. Join India Today now on WhatsApp. Scan the QR code. You're on board the Newstrack. I've got information coming in that a Delhi police team from the crime branch has reached the residence of Chief Minister Kejriwal. They've apparently come to serve him notice. We're joined by Sushant Mehra, who's our reporter on the ground. Sushant, what case is this where the Delhi police wants to give a notice, and where is the Chief Minister? Is he accepting the notice? What's going on at his residence right now? राहुल जी, मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की तस्वीरें। लगभग 8 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच टीम है वो नोटिस सर्व करने के लिए यहाँ पहुंची थी। दरअसल 6 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से और आम आदमी पार्टी की जो विधायक है आतिश की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा गया था कि ऑपरेशन लोटस लाने की कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है। उनके 7 विधायकों को जो है वो खरीदा जा रहा है, जिसको लेकर के उनके पास कई सारे सबूत है। जिसके बाद दिल्ली बीजेपी की तरफ से एक पूरा डेलीगेशन दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने के लिए पहुंचा था और शिकायत दी थी आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ। जिसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम जो है वो अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर नोटिस सर्व करने के लिए पहुंची है। हालांकि इससे पहले वो नोटिस सर्व करने आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंची थी और उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची है। हालांकि मुख्यमंत्री को एक कार्यक्रम के अंदर एक जाना था। मुख्यमंत्री ने फिलहाल नोटिस जो है वो रिसीव नहीं किया है। क्राइम ब्रांच की टीम कल एक बार फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर आएगी और उनको नोटिस जो है वो देगी। दरअसल दिल्ली पुलिस ये जानना चाहती है कि जो आरोप आम आदमी पार्टी के लीडर्स की तरफ से लगाया गया है उसके पीछे सबूत क्या है, क्या कुछ उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन है। पूरी इन्वेस्टिगेशन को दिल्ली पुलिस जो है वो करना चाहिए, क्योंकि 25 करोड़ रुपए का मामला है जिसके अंदर कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि उनके विधायकों को पैसों का लालच जो है वो दिया जा रहा है 25-25 करोड़ रुपए और उनको खरीदने की कोशिश जो है वो की जा रही है। जिस तरीके से झारखंड में किया जा रहा है उसी तरीके से ऑपरेशन लोटस लाने की बात जो है वो दिल्ली में भी की जा रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ दिनों बाद गिरफ्तार हो जाएंगे। और ऐसे में ये आरोप आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से लगाया जा रहा था कि बीजेपी लगातार फोन कॉल्स कर रही है और उनके पास इस तरीके के पूरे सबूत है। अब बीजेपी ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को किया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन जो है वो करेगी। Okay, Sushant, we'll leave it there. The Delhi CM not at his residence. I'm receiving information that they've had to turn back without being able to serve him notice. He's also evaded 5 ED notices. That didn't end very well for Hemant Soren. Let's see what happens with the Delhi CM. We'll track this story closely. Sushant, thank you. Congress MP and Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivkumar's brother D.K. Suresh has triggered a big storm after he claimed that southern states will have to become a separate nation. Suresh had made the comment after the interim budget, claiming that the southern states had been ignored. Top union ministers came out all guns blazing against the Congress, demanding an apology from Sonia and Rahul Gandhi. देश के बारे में हमारे कांग्रेस के लोग अपनी कुर्बानी दी है। Talking about dividing this country, sitting member of the house. ये देश को बांटने की सोच है। जिस प्रकार से देश के संविधान के ऊपर ये आहत है। Sloganeering and ruckus. Parliament on Friday witnessed chaotic scenes over Congress MP D.K. Suresh's remark that South India may have to become a separate nation. After Finance Minister Nirmala Sitharaman presented interim budget, Suresh, the brother of Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar, claimed that South India was getting ignored by the centre
and this will eventually lead people in the south to demand a separate country. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹಂಚ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಇಡಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹಿಂದಿ ಪ್ರದೇಶದವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. His remarks sparked a fiery exchange of words between the BJP and the Congress. Union ministers Nirmala Sitharaman and Piyush Goyal attacked the Grand Old Party, while Congress chief Mallikarjun Kharge was in damage control mode. What more can be important than the unity of this country, sir? At that time, we have learned senior member from another party in the opposition talking to us about the role of the honorable members. This is diversionary. अगर कोई भी देश को तोड़ने की बात किया, हम कभी सहन नहीं करेंगे, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे मेरे पार्टी का हो, चाहे उनके पार्टी का हो, चाहे और किसी के। मैं समझता हूँ ये देश को बांटने की सोच है। जिस प्रकार से देश के संविधान के ऊपर ये आहत है, देश के संविधान का अपमान है, जिस प्रकार से देश की एकता और अखंडता के ऊपर ये अपमान किया गया है। देश तोड़ने का बात हुआ है सर, ये बहुत बड़ा गलती किया है, बहुत बड़ा मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा क्राइम है. The Congress distanced itself from the remark on separate nationhood, but backed Suresh's charge that the centre is punishing non-BJP states that are doing well. Bihar, UP, Madhya Pradesh, they are getting more land share compared to Karnataka, because Karnataka is the second state as far as the tax collection is concerned. Mr. Suresh or any other leader, which party or any other leader, may consider the pain of South India. Suresh's remark has once again reignited the North-South debate. Bureau Report, India Today. Tamil actor Thalapathy Vijay is the latest southern superstar to take the political plunge. Vijay announced his political party, TVK, declaring his commitment to bringing fundamental political change. Vijay says he will contest the 2026 Tamil Nadu elections. Ranked among the highest paid actors in Tamil cinema, boasting an immense fan following, at 49 Vijay is forging a new path. The acclaimed southern superstar has declared his entry into politics. Get ready, folks! உங்க ஊர் தலைவனை தேடி புடிங்க. இதுதான் நம்ம சர்க்கார். Following the footsteps of other high-profile stars who ventured into politics, இன்னைக்கு என்ன நாள்? எலெக்ஷன் டே. நான் என்னோட ஓட்டு போடுறதுக்காக வந்திருக்கேன். Vijay's supporters joyously marked his political debut, celebrating in the streets, distributing sweets and offering prayers. Vijay named his political party Tamiraga Vetri Karagam, which loosely translates to Tamil Nadu Victory Party. An application for party registration has been submitted to the Election Commission. However, Vijay's party won't be contesting the upcoming 2024 Lok Sabha elections. In his announcement, Vijay revealed plans to contest the 2026 Assembly elections in Tamil Nadu. His entry into politics, he stated, is fueled by a desire to bring about significant political change in the southern state. Citing corruption, administrative malpractices, and a divisive political culture, Vijay aims for a transformation. Politics na modala service என்றது அவனுக்கு தெரியணும். காலேஜ் படிக்கும் போதே இந்த எலெக்ஷன் கேன்வாசிங் லீடர்ஷிப் இதை பற்றிலாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நாளைக்கு ஸ்டேட் சென்ட்ரல் எலெக்ஷனை பற்றி ஒரு அவேர்னஸ் வரும். காலேஜ் படிக்கிற மாணவர்கள் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓட்டர்ஸ். அவனை சரியாக சிந்திக்க விட்டாதான் அடுத்த தலைமுறைக்கு ஒரு நல்ல தலைவன் கிடைப்பான். ஒரு நல்ல தலைவன் உருவாகிறதுக்கும் இல்லை ஒரு நல்ல தலைவனை சூஸ் பண்ணுறதுக்குமான பக்குவம் அவங்களுக்கு வரும்.
The AIADMK responded sharply, alleging that Vijay is a pawn in Tamil Nadu's political landscape, strategically placed by the BJP. He will help BJP to gain some footholds in Tamil Nadu. After BJP's desperate attempts with many faces, particularly Rajinikanth, it has fallen flat. Since our leader made it very clear that we are terminating our ties with BJP, not only for the Lok Sabha as well as for assembly elections. Now BJP has taken a lead with Vijay. Definitely BJP can't rename their party as Bharatiya Janata Kalagam to grow in Tamil Nadu. So they need a face and a name. So which Vijay is now there to help them. On the other hand, Tamil Nadu's DMK and BJP welcomed Vijay's political entry, hailing the launch of his new party. இந்திய ஜனநாயகத்துல யாருக்கு வேணா அரசியல் இயக்கம் துவங்குகின்ற இந்திய ஜனநாயகத்துல அரசியல் இயக்கம் ஆரம்பிக்கின்ற அந்த உரிமை இருக்கிறது. நடிகர் விஜய் அவர்கள் இந்த முடிவு எடுத்திருக்கிறார். அவருக்கு நம்ம அனைவரும் சேர்ந்து பாராட்டுகள். அவருடைய மக்கள் பணி சிறக்கட்டும். See, anyone is welcome into politics. It's a democratic country. He is welcome. Mr. Vijay is welcome. Let him serve the people. One more person has come to serve the people through politics. There is no issue. The spotlight is on actor Vijay's political journey, a new saga in the making. Bureau Report, India Today. This is where we wrap up the Newstrack tonight. For your time and interest, thank you very much. I look forward to seeing you 8 p.m. Monday evening. We've got 2 big interviews with top union ministers coming up over the weekend, so I hope you'll tune in for that. I look forward to seeing you Monday evening at 8. Goodbye. Sveda by Cola. Wish everything cared for your skin. Get ready for an immersive journey into the heart of news, politics, and insights that matter. Join India Today now on WhatsApp. Scan the QR code. Colors by Cola makes you wish everything was as vibrant. How many seats will the BJP get if general elections are held today? Who would you rate as India's best chief minister? Do you support the idea of one nation, one poll? Will the consecration of the Ram temple help the BJP in the Lok Sabha elections? All this and more in the next edition of the India Today Mood of the Nation opinion poll, exclusively on India Today TV. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. हमारी पार्टी ने 2022 के चुनाव में संकल्प लिया था कि नई सरकार के गठन होने पर हम उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू करेंगे और उसके लिए कमेटी बनाएंगे ड्राफ्ट बनाने के लिए, और हमने वो कमेटी बना दी। कमेटी ने मई 2022 से काम करना शुरू किया
और आज 2 फरवरी 2024 को उन्होंने अपना ड्राफ्ट हमको दे दिया। और आज हमको लगभग 740 पेज, जिसमें कि 4 वॉल्यूम में ये रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट को हम आज हमें मिली है। इसको हमारा जो विधि डिपार्टमेंट है, संसदीय कार्य विभाग है, सभी विभाग उसको देखेंगे। अभी हम इस पर चर्चा करेंगे, परीक्षण करवाएंगे और आगे की कार्रवाई। विधानसभा का सत्र हमने इसी के निमित्त ये विशेष सत्र आहूत किया गया है। 5 तारीख से विधानसभा का फरवरी में इसी माह विधानसभा का सत्र आहूत है। In politics, everyone has an opinion, but I have the data. Whose stock is rising? Whose graph is falling? Track India's political stock exchange. Unmatched, unmissable data analytics. The only show on News TV when numbers do the talking. India's most credible poll tracker. The Political Stock Exchange with Rahul Kanwal only on India Today. So sorry. He loves me. He loves me not. 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 He loves me. Presented by JK Tyre Ranger Series. Stay wild at heart. Co-presented by Star Health Insurance, the health insurance specialist. Co-presented by New Kia Sonet, the wild reborn. Co-powered by The bold look of Kohler. Good evening, hello and welcome. You're with the news today, your primetime destination. News, newsmakers, talking points. The big talking point is coming from the gloves are off. Mamata Banerjee now targets Rahul Gandhi, calls him a migratory bird, interested in only photo ops. Is the India alliance almost dead?
Also, as Arvind Kejriwal skips the Enforcement Directorate summons again, will he be the next to fall? Is he going to be the next target of the Enforcement Directorate? We'll be raising that too. But first, as always, it's time for the 9 headlines at 9. India alliance split wide open as Mamata Banerjee targets Rahul Gandhi and the Congress. The West Bengal Chief Minister claims Congress will not win even 40 seats in the Lok Sabha, calls Rahul Gandhi's yatra in Bengal a photo op. Arvind Kejriwal skips a 5th ED summon in the Liquorgate probe as the BJP hits the streets. Delhi Police Crime Branch visits the Chief Minister's residence over AAP, claiming that BJP tried to poach their MLAs. 37 Jharkhand MLAs at a Hyderabad resort ahead of a floor test. Champai Soren takes oath as the new Chief Minister of the state. Hemant Soren in 5-day ED custody. Big setback for the Muslim side in the Gyanvapi mosque dispute. Allahabad High Court allows Puja rituals to continue in the basement of the mosque complex. Showdown in Parliament over a Congress MP DK Suresh's separate country for the South remark. Union Minister comes down heavily on the Congress, seeks an apology from Sonia and Rahul Gandhi. Uttarakhand Uniform Civil Code draft details access, polygamy to be banned, live-in relationships to be declared, scheduled tribes to be exempt from UCC regulations. South superstar Thalapathy Vijay floats a new party, Tamiraga Vetri Karagam. Actor Vijay puts focus on the 2026 Assembly poll, says he will not be lending support to any party for the Lok Sabha elections. After Reserve Bank of India cracks the whip,